Yes, we'll be starting with the explanation of the block diagram. But before that, you need to write down somewhere below this block diagram. Please write down the full form of ISR, PR, IPR, and IMR. Okay. So write down for ISR, it is in service register. ISR stands for in service register. In service register. Then for PR, write down priority resolver. Priority resolver. Priority resolver. 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 Priority resolver. IRR. Write down interrupt request register. Interrupt request register. So we have to see these three blocks. These are the important blocks. And to these IRR, you have connected the interrupt request. That is from IR0 to IR7. Okay. So IRR stands for interrupt request register. Then write down for IMR. IMR. It is interrupt mask register. Interrupt mask register. Interrupt mask register. Yes, now we are going to see the explanation of this block diagram. Sometimes the question is asked to explain the functional block diagram of 8259. Sometimes the question is asked to explain the interfacing of 8259 with 8086. Okay, so depending upon the questions, you should know this. Okay, so before we go for the interfacing of 8259 with 8086, we should know the pin configuration, which already we have seen in the exercise class. We should know the functional block diagram. Today we are going to see. After understanding the pin configuration as well as the functional block diagram, then we are in the state to understand how this 8259 is interfaced with 8086. Okay, so we are going to see how the interfacing has to be done afterwards when you understand with this concept. Now we are familiar with all the pins. Now you have understood all the pins. Now you will be able to see all the pins available here, 28 pins. Okay, and you can treat these as an internal functional block diagram of 8259. 8259 ICK under ESF functional block diagrams. Okay, now there are basic how many important blocks. So all the blocks are important. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 blocks are there, which comprises of the functional block diagram comprises of this particular 8 blocks. Okay, so we'll see what are these 8 blocks one by one. We'll start with the control logic. Now in the control logic, as the name suggests, it is a control logic. So we have INT A bar, which is input, and INT as an output. I already have explained you. INT will be connected to INTR of 8086, and INT A bar, which is an input, is connected to INT A bar of 8086. Okay, so these are the control signals we have, which are connected with the control logic. This particular control logic is also connected with ISR, PR, and IRR. ISR, PR, and IRR. Okay, so depending upon what is happening here, okay, the control logic will sense the signals from them, and it will send accordingly the signals through INT, or it will receive through INT A bar. Okay, so sensing of the signals are from these particular blocks. Okay, these blocks are also connected with IMR. Okay, they are connected with IMR, that is interrupt maskable register or interrupt mask register. Okay, now we have understood INT A bar, we have understood INT. Okay, now this is a particular internal bus. When I'm talking about the internal bus, it may be data, it may be address, or it may be control bus. In together we call as a system bus. You can also call it as an internal bus. Okay, so this bus
comprises of data bus, address bus and control bus. Okay, जैसे मेरी requirement है वैसे मैं उसका नाम दूंगा. Okay, but overall I'm saying as an internal bus. Okay, so in this internal bus, your data may flow, your address may flow, your control signals may flow. Okay, your control signals may flow. So this is about the control logic. Then we will start from here. I will go at the last for these 4 blocks. Then this data bus buffer. So data bus buffer, that means you know that there is a data that is D0 to D7. Okay. So as far as 8259 is concerned, we have only D0 to D7. We have only D0 to D7. So you know this D0 to D7 is used to send your interrupt type from IO device to the 8086. Okay, because 8086 should know what is the interrupt type number. Okay, so that type number is given to 8086 through D0 to D7. Okay, so this is a data bus buffer. This is bidirectional. Okay, this is bidirectional, and as I'm having D0 to D7, so it's a bunch. It is a bunch of 8 lines. That's why it is drawn in this manner. That is why it is drawn in this manner. Single line, that is single line. Okay, but here it is D0 to D7, so that is a bunch of lines or multiplex lines. That is why it is shown in this arrow. Okay. And it is bidirectional, input as well as output. And this is about the data bus buffer. Then this is the read-write control logic. So yeah, you know this. If I want to read from 8259 RD bar, if I want to write into the 8259 WR bar, both are active low. A0 is the internal bus. As I already told you that 8086 is having total 20 address lines, but for 8259 only one address line, that is A0. This A0 is also called as the internal address line. इनका खुद का internal line होता है. Okay, but this A0 is connected with one of the address line of 8086. Okay, this A0 is connected with one of the address line of 8086. So while interfacing of this particular 8259 with 8086, we will see where A0 is connected. Okay, वो किसके साथ connect होता है? CS bar, this is chip select. ये chip select होगा तभी ये selection, इसका selection होगा, ये particular 8259 का selection होगा. Suppose मेरे पास 58259 है. Suppose मेरे पास 58259 है. अगर मुझे ये particular 8259 को select करना है, तो इसका CS bar 0 होना चाहिए और बाकी का CS bar 1 होना चाहिए. इसका मतलब क्या है? ये पर्टिकुलर 8259 ही मुझे सिलेक्ट करना है, तो इसका चिप सिलेक्ट शुड बी एक्टिव लो, वो 0 होना चाहिए, और बाकी ये जो 4 है वो उसका चिप सिलेक्ट हाई होना चाहिए. ओके, तो बाकी को मैंने सिलेक्ट नहीं किया है, सिर्फ इसको मैंने सिलेक्ट किया है. ओके, सो इफ आई वांट टू यूज दिस पर्टिकुलर 8259, CS bar, that is chip select, should be 0. Okay, that is active low. So this is about the read-write logic. Then come to the cascade buffer comparator. Now this cascaded buffer comparator is mostly used when I'm using cascaded 8259. That means under the master and slave configuration. Okay, so if I have to connect more than one 8259, because out of this total number of 8259, one will be used as a master and other 8259 will be used as a slave. Okay, so they are connected in the cascaded manner. So in that case, I have to use CS0, CS1, CS2. Okay, so these are the 3 dedicated lines used for the cascading. Okay, and SP/EN bar. About this also I will explain you. Okay, about this also I will explain you when I will be talking about the interfacing of 8259 with 8086. So here you have to understand that this is a slave program enable buffer. Okay, actually इसका dual function होता है, ये dual function होता है. It depends upon. Now you please understand, this is important. Some part I will explain here itself and the remaining part I will explain while interfacing. SP/EN bar, इसका मतलब slash program enable, slave program enable, as well as enable buffer. EN stands for enable buffer, SP stands for slave program. वही हमने लिखा था. Let me check. Yes, slave program or EN stands for enable buffer. Okay, now enable buffer means this will be used as a buffer, that is a storage, and slave program means when I have connected with the cascade, when
I'm repeating, when it is connected as a cascade, suppose if this particular 8259 is used as a master, then this SP bar will be 1. And when this 8259 is used as a slave, in that case SP bar should be 0, because SP bar is active low. तो अगर ये 8259, ये पर्टिकुलर 8259 अगर स्लेव में काम कर रहा है तो SP बार शुड बी 0. इसका मतलब ये पिन 0 होनी चाहिए. आई एम टॉकिंग अबाउट कैस्केडिंग मास्टर स्लेव. लेकिन अगर मैंने एक ही 8259 लगाया तो दिस विल बी यूज एज अ enable buffer. Enable buffer means it is used as a storage. It is used as a storage buffer. और ये क्यों होता है as a storage buffer? Because it has to take the data from from IO device to 8086 या फिर from 8086 to IO device. I'm repeating again. When this 8259 is used as a single, अगर सिर्फ आपके सर्किट में सिर्फ एक ही है ये, ओके, एक ही है, तो ये 8259 कैसे काम करेगा? बफर जैसा. बफर का क्या मतलब है? स्टोरेज. तो आपका जो डेटा आईओ डिवाइस से 8086 में जाएगा या फिर 8086 का डेटा जब आईओ डिवाइस में जाएगा, दैट इज वाया 8259. तो दिस इज यूज एज ओनली बफर. सिर्फ ये मीडिएटर जैसा काम करेगा. डेटा आपका इसमें स्टोर होगा और वो डेटा आगे जाएगा, खत्म. ओके. लेकिन अगर ये मास्टर स्लेव में है तो मास्टर स्लेव में आपको पता है मोर देन 1 8259. तो जो 8259 मास्टर है वो टाइम ये पिन काम करती है स्लेव प्रोग्राम जैसे, लेकिन वो उसमें वो मास्टर है, वो 8259 मास्टर है, तो ये पिन हो जाएंगी 1. और अगर दूसरा 8259 जो स्लेव है तो ये पिन हो जाएंगी 0. तो ये ड्यूअल फंक्शन है, प्लीज रिमेंबर. इट इज यूज एज अ SP0 when it is slave, SP1 when it is master, but under the master and slave configuration. लेकिन अगर एक ही 8259 है then it is used as a data or enable buffer. That is it. Okay, enable buffer. Okay, so dual function. So this is important. इसलिए ये इसको हमने यहाँ पे लगाया because SP is used when it is in the cascade. Okay, so we have seen 1 2 3 blocks. Come to now these important blocks. These are the important blocks. Okay, these are the important blocks. We'll start from here. Now you know you have IR0 to IR7, so you can connect 8 IO devices. So when you are connecting 8 IO devices, every IO device will be connected through IR0 से लेके IR7. Okay, now what is happening is, suppose you have connected IO devices, so everyone is wants to interrupt 8086, so it is through 8259. So whenever it is accepting all the interrupt requests, that is why it is called as IR. So these requests is getting stored in IRR. What is IRR? This is interrupt request register. It is interrupt request register. Yes, interrupt request register. So every request will be registered here. Okay, so it is used as a storage now. So all the interrupt request is stored here now. आगे क्या? It is given to the priority resolver. Now this is important, priority resolver. तो priority resolver का क्या काम है? Priority resolver का ये काम होता है कि depending upon the priority, now it is going to see the priority. कि किसकी priority ज्यादा है. Because जिसकी ज्यादा priority, that will be served first. और जिसकी कम से कम priority, that will be served as a last. Okay, so priority resolver will sort the priorities according to the highest priority to the lowest priority. Okay, और जो highest priority है, that will be served first. Okay, so can I say जो highest priority है, that will be served first, and the remaining priorities will be marked. So that is why masking का जो काम होता है वो ये करता है. This is what interrupt mask register. So interrupt mask register will mask the remaining request,
and the highest priority will be giving service, will be served. So that is why this is given to this control logic, and from this control logic through INTR it is given to 8086. Okay, so PR is bidirectional and it is given to INT. Okay, so this is priority resolver. Then here ISR. ISR stands for what? It is in service register. In service register. So actually यहाँ से नहीं जाते समय the current interrupt which is being served. So after this PR it will go to ISR. So when the priority is decided, then it is given to the ISR, and this is in service register. That is in service register. The current interrupt which is being served, it is through this particular ISR. That is why it is called as in service register. So collect all the requests. After collecting all the requests, sort them as per the priorities. After setting them into the priorities, the remaining priorities will be masked. It will be masked. Okay. Then the one which has to be served, that is given to ISR, and from this ISR, the current that is pehle ye, baad mein ye, so that is through ISR. That is through ISR. So this is called as in service register. In service register. Okay, and they are internally connected to carry out the smooth working. So they are internally connected to carry out the smooth working. Okay, so this is how the collection of all the 8 interrupts requests are taken. It is registered. It is getting resolved by the priority resolver. Then the service registers will use them and will give service one by one. Okay, तो यहाँ पे सिर्फ sorting का काम होता है, यहाँ पे service actually देनी पड़ती है. So they are giving service one by one. Okay, and all the 4 blocks, they are working in coordination with each other. So for the smooth working, Okay, so always remember these 4 blocks are the important blocks. Okay, so this is all about the internal functional block diagram. This is all about सर एक डाउट है सर, IMR का फुल फॉर्म क्या है? इंटरप्ट मास्क रजिस्टर. ओके सर, तो फिर सर आपने बोला कि वो मास्क करता है अकॉर्डिंगली, तो सर IRR से IMR में जाना चाहिए ना एरो सर, बिकॉज वो इंटरप्ट का टाइप पहले चेक करेगा फिर वो मास्क करेगा सर, राइट? What I'm saying, these arrows are drawn to show that they are having coordination with each other. Depending upon the coordination, the priorities will be set, and the highest priority will be served first, and the last priority will be served at the last. Even though the arrows are drawn for every block, this just to show you that IMR is in coordination with all the 3 blocks. Because ऐसा नहीं होता है कि because IRR आ रहा है, because there has to be a coordination. IRR आ रहा है, it has to see whether IRR is having all the interrupts. Okay, it has to check whether the type numbers are same or not. If the type number are same, one has to be masked. Okay, so some of the part will be worked by this IMR. Okay, so these arrows just to show you that they are all working in the coordination. Because if they are not working in the coordination, because it has to mark some of the interrupts which are non-maskable or which doesn't have the highest priority. Okay, so this is having the coordination. That's why these arrows are. Okay, sir. So in the exam, do not write down the short forms. वो ब्लॉक के अंदर ही उनके फुल फॉर्म्स लिखने. अभी मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म्स लिखे. Okay, so this is about the functional block diagram. Now before actually we go to the interfacing of 8259 with 8086, there is a small the subtopic which is remaining, that is you just write down the heading as, वो भी important है, because you should know the priorities किसकी क्या क्या है. You should know the priorities. Okay, so please write down functional block. Achha, if you want to write down something about the functional block diagram, you please write down. I will give you something in the writing. Otherwise, we will do one thing. This thing you can just see in the ebook. Okay, and you can just
understand this. Whatever I have explained you, accordingly you refer the ebook. Okay. Yes, sir. Okay. Now write down the small topic which is important and you should know. The topic is priorities of interrupts of 8086. Priorities priorities of interrupts of 8086. This is a small but important topic which was left, so thought of taking now before we proceed for the interfacing. So what you have written? Priorities, that is of 8086. Priorities of interrupts of 8086. Okay. So I have told you that we have hardware interrupts, we have software interrupts. Okay. So when you are talking about the software and hardware interrupts, we should know किसकी priority ज़्यादा है, किसकी priority ज़्यादा है, किसकी इंटरमीडिएट में आती है और किसकी सबसे लोवेस्ट होती है. So we should know this. Okay. क्योंकि processor will always give the service to the interrupt which is at the highest priority. Okay. उसके बाद भाई कम प्रायोरिटी वाला, उसके बाद उससे कम वाला, उसके बाद उससे कम वाला, उसके बाद सबसे कम वाला सबसे लास्ट में, सबसे कम वाला सबसे लास्ट. Okay. So you should know the priorities of 8086. So while explaining you the software interrupts as well as hardware interrupts, okay, I have told you what are the hardware, what are the software interrupts. Now taking these all the interrupts as a whole together, we are taking all the interrupts as a whole together, we can say that the software interrupts are always given as the higher priority as compared with the software interrupts are given highest priority as compared with the hardware interrupts. Okay. So all your INT NN interrupts are given the higher priority as compared with the hardware interrupt. Hardware interrupt, that is INTR or NMR. Okay. But there is an exception for that. But when you are talking about NMI, when you are talking about the NMI, and suppose you have an interrupt of INT00H, that is divided by 0. Okay. Now remember one thing, as far as I have told you that you have software interrupt as well as hardware interrupt. So whenever you talk about the software interrupt, your INT00H is given the highest priority as far as software interrupt is concerned. Okay. And when you talk about the hardware interrupt, your NMI is given as the highest priority. Okay. I have made a statement that your software interrupts are given higher priority as compared with the hardware interrupts. Okay. I am making the statement now. In the software interrupt, INT00H is the highest priority, and among the hardware interrupt, NMI is the highest priority. That means पहले NMI, बाद में INTR, and that is obvious because it is the name suggests, it is non-maskable. Okay. So this is the highest, this is the second. In the software, INT00 is the highest. It is the highest. Okay. But there is an exception. Now suppose there is an interrupt of INT00, software interrupt. Okay. So while giving service to INT00, okay, if there is an NMI interrupt, okay, so the processor has to give the priority to NMI. Okay. So as a whole, overall, I can say
software interrupt, that is INT00 highest priority. Second priority is NMI. But during the execution, if INT00 comes and while serving this, suppose suddenly NMI comes, then processor has to stop for giving the service to INT00. It has to give first service to NMI. Then after giving service to NMI, it has to come back and give service to NMI, INT00. Okay, so this is an exception. You should know this. Okay, sometimes this question can be asked in the Viva, so you should know this. Okay, and in general now in general, I can just write down the table. There is a table for this. There is a table for this. Okay, so the table says that you have interrupt and there is a priority. You have an interrupt and there is a priority. Okay, so divide by 0. Divide by 0, then INTN. Okay, INTN. Divide by 0, comma, INTN. So this everything whole together is having highest priority. अभी INTN इसलिए मैंने जनरल में लिखा. Okay, और उसमें भी INT0, that is INT00 is having the highest priority. Okay, और ये हो गया फर्स्ट नंबर पे. सेकेंड नंबर पे you have NMI. Okay, so your priority goes on decreasing. सबसे लास्ट में आएगा लोवेस्ट. सबसे लास्ट में आएगा लोवेस्ट. सर लेकिन आपने अभी बोला कि एनएमआई को पहले प्रायोरिटी मिलेगा अगर वो दोनों सेम टाइम पे ऑफर करते हैं. तो मैंने आपको क्या बोला था सबसे पहले, जनरली मैं बता रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर इंटरप्ट को हायर प्रायोरिटी एज कम्पेयर विद द हार्डवेयर इंटरप्ट. ये सबसे पहले स्टेटमेंट मेरा था. दूसरा स्टेटमेंट मेरा ये था कि INT00 अमंग द सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इज हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी. मेरा बाद में तीसरा स्टेटमेंट था हार्डवेयर इंटरप्ट की अगर बात करता हूँ तो NMI में हाईएस्ट और INTR सेकेंड. बाद में मैंने क्या बोला था, बट देयर इज एन एक्सेप्शन. अगर आप INT00 को सर्विस दे रहे हो और बीच में अगर NMI आया तो प्रोसेसर को इसको छोड़ के NMI को सर्विस देनी पड़ती है. इसका NMI को पूरा सर्विस देने के बाद वो वापस INT00 के पास आता है. और मैंने बाद में ये बताया कि मैं अभी जो लिख रहा हूँ ये जनरल लिख रहा हूँ. वो जनरल लिख रहा हूँ. ओके, हाँ, तो डिवाइड बाय 0, INTN जनरल में हाईएस्ट है, बाद में NMI आता है. लेकिन आप बोलोगे सर डिवाइड बाय 0 भी आ गया और NMI भी आ गया, मैं किसको सर्विस दूं? तब वो NMI को पहले सर्विस देगा और बाद में इसको देगा. लेकिन अभी मुझे जनरल लिख रहा हूँ ना मैं, तो NMI को मैं पहले नहीं लिख पाऊंगा और इसको मैं सेकंड नहीं लिख पाऊंगा. ओके, तो इसलिए ये पहला, ये सेकंड, और आपका थर्ड आता है INTR. आपका थर्ड आता है INTR और बीच में बहुत सारे इंटरप्ट होते हैं. तो सबसे लोवेस्ट में है, मैं फोर्थ नहीं लिखूंगा. आई विल नॉट राइट डाउन द फोर्थ वन, आई विल जस्ट राइट डाउन सिंगल स्टेप वाला जो इंटरप्ट है उसका क्या टाइप नंबर है? व्हाट्सएवर सिंगल स्टेप का है. INT00 से लेकर INT04 तक में एक जो इंटरप्ट होता है जिसका सिंगल स्टेप होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ सिंगल स्टेप. उसका प्रायोरिटी सबसे लोवेस्ट. ओके, तो यहाँ पे लिखने के लिए मैंने 1 2 3 लिखा. इसके लिए मैंने 4 नहीं लिखा क्योंकि इसके बीच में है डॉट. ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक विच वाज लेफ्ट. सो यू शुड नो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी, उससे कम किसकी, उसकी कम किसकी, सबसे कम किसकी. Okay, so please remember this table. After that, so I'm not going to give some writing about this, so you have understood. Okay, now write down interfacing of 8259 with 8086 microprocessor. Interfacing of 8259 with 8086 microprocessor. And for this there is a diagram. So I want everyone to draw this now.
Please draw along with me. So here you have 8086. So as there is no space, 8086. Then there is a latch and buffer. Latches and buffer. Then here you have your 8259. This is a 8259. Please draw along with me fast. Then you have three raised to 8 decoder. 3 raised to 8 decoder. और ये आईसी का नाम है, ऑलरेडी हमने पढ़ी है, 74LS 74LS 138 138 74LS 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 138. So we'll draw the diagram now. Now here you have CPU bus, okay. Then from the latch, it is G2B bar, G2B bar, G1. This is plus 5 volt. A, B, C, G2A. कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछो मुझे. So this is M/IO bar. So this is D0 to D15. And this is A0 to A19. इसमें से I have taken A1. सर हाँ, सर आपने वो क्या लिखा है A0 ये और A1? A0 है, ये A0 है, ये एरो है, नीचे एरो जा रहा है और एरो को ऐसा की नीचे एरो जा रहा है, उसको ऐसा किया है, उस पर 1 लिखा है और साइड में A1 लिखा है. ये जो एरो है ये वाला, ये मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है, और नीचे A0 है.
Yes, this is a block diagram. Actually, this is how your F259 will be connected with 8086. और डायरेक्टली हम इधर का लाइन उधर डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करते. Okay, with some understanding. Okay, so that there should be a smooth conduction. Okay, so we have to use 3x8 decoder also. Okay, so 8259 के उधर है ना IO device, because IR0 से लेकर IR7, so 8 IO devices will be connected. उसके ये 8259 का इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होगा, इसके पहले हमने देखा है 8259 के फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम में हमने देखा है, तो ये सब आएंगे और बाद में एक्चुअली फिर ये फ्लो ऐसा रहेगा. The scenario looks like this when you talk about the interface. So shall I explain this? Have you completed the drawing this interface in block diagram? Yes, sir. Okay. Now everyone pay attention. Afterwards you can see this recording and you can draw. Please pay attention, all of you. Now here you have 8086. Now no pin, एक ऐसा कौन सा भी पिन नहीं है जो आपको नहीं समझ में आता. You know each and everything. Okay, but we'll see what actually happening here. Now you have 8086. You have a CPU bus. CPU bus means that is the internal bus, data bus, control bus, and address bus. Okay. Now you know there is a latch and buffer. You know there is a latch and buffer. Out of this latch and buffer is your data
आपको पता है 8086 is 16-bit data, so D0 to D15, and 8086 is of 20-bit of address line, so that is A0 to A9. Okay, so here you have D0 to D15 and you have A0 to A19. So this one is the data line and this one is the address line. Actually मैंने ऐसा बनाना चाहिए था, bundle. Okay, bundle in this manner. ये डेटा लाइन के लिए और एड्रेस लाइन के लिए मैंने कैसा बनाना चाहिए? ओके, सो दिस इज द डेटा, बिकॉज अंदर भी जाता है बाहर भी जाता है, सो दिस इज द वे. और एड्रेस के लिए सिर्फ बाहर जाता है. ओके, सिर्फ बाहर जाता है. बट आई हैव ड्रॉन बिकॉज देयर वाज नो स्पेस, बट इन द एग्जाम यू कैन ड्रॉ इन दिस मैनर. ओके, अगर ऐसा भी बनाते हो और उसके ऊपर आप ऐसा लिखते हो तो भी चलेगा, देयर इज नो हार्म. So this is A0 to A19, D0 to D15. Okay. Now you know that 8259 will only use D0 to D7. तो आपने देखा है क्या ये D0 to D7 यहाँ पे देखा है D0 to D7 और वो 8 लाइन है, that is 8 लाइन. तो इसमें से सिर्फ D0 to D7 वो लेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है D0 to D7. और A0 to A19 में से उसको एक ही लाइन चाहिए, मैंने बोला था A0 सिर्फ एक ही लाइन से कनेक्ट रहेगा. ओके, अब इसमें जो A0 to A19 है, A0 to A19 में का एक ही लाइन और वो लाइन का नाम है A1. तो आप पूछेंगे सर A0 क्यों नहीं लिया? तो A0 कुछ दूसरा काम कर रहा है. A0 कुछ दूसरा काम कर रहा है. ये A0 है 8086 का, ये A1 है 8086 का, ये A0 है 8259 का. तो 8259 का A0 कनेक्टेड विथ A1 और वो एड्रेस हमेशा 1. अभी हमेशा 1 नहीं है. ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. यू कैन राइट डाउन समवेयर, ये हम सब आगे लिखने वाले. बट व्हेन योर A0 is equals to 1 and if your A0 is equals to 0, the scenario is that, please pay attention, when A0 is equals to 1, that means you can connect IO devices. ये जो दिख रहा है ना IR0 से IR7, यहाँ पे हम IO devices लगा सकते हैं. लेकिन अगर A0 आपका 0 है तो यू कैन कनेक्ट मेमोरी, यू कैन कनेक्ट मेमोरी. ओके, तो अगर मुझे मेमोरी लगानी है तो मेरा A0 0 चाहिए और अगर मुझे IO डिवाइसेस लगाने हैं तो A0 1 चाहिए. तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली IO डिवाइस ही मुझे लगाने हैं, इसलिए A1 को मैंने 1 रखा जो डायरेक्टली A0 से कनेक्ट हुआ. ओके, so you have understood how the connection is made here. Okay, then the next part. Now out of A0 to A19, A1 तो यहाँ पे एंगेज हो गया, A1 तो यहाँ पे एंगेज हो गया. 4 और एड्रेस लाइन यहाँ पे एंगेज हो गए, A0, A7, A6, A5. इसलिए देखो मैंने यहाँ से खींच के यहाँ पे लाया, ओके. तो A0 यहाँ पे, A1 यहाँ पे, A2, A3, A4 डोंट केयर कंडीशन, उसको हमने यूज नहीं किया है, इसलिए डोंट केयर बोले तो ये वाला, इसका मतलब आप उसको डायरेक्ट 0 रख सकते हो. ओके, सो जो भी एड्रेस लाइन यूज नहीं हुए वो डोंट केयर कंडीशन है, इसका मतलब हम वो सबको 0 रखे हैं. ओके, सो A0 यहाँ पे, A1 यहाँ पे, A2, A3, A4 0 0, A5 यहाँ पे, A6 यहाँ पे, A7 यहाँ पे. अभी A5, A6, A7 क्या काम कर रहा है? दिस इज 3:8 डिकोडर, 3 इनपुट 8 आउटपुट. 3 इनपुट कौन से? A B C, और वो कहाँ पे कनेक्ट हुआ है? A5, A6, A7 से. तो आउटपुट आपका सिलेक्ट कैसे होगा? डिपेंडिंग अपॉन दिस. इफ ऑल आर 0, Y0 बार विल बी सिलेक्टेड. नाउ दिस इज एक्टिव लो. ये आउटपुट कौन सा है? एक्टिव लो है. ओके, ये आउटपुट क्या है? एक्टिव लो. सो व्हेन ऑल आर 0, Y0 will be connected, Y0 will be used as a output. अब ये आउटपुट कहाँ पे कनेक्ट किया है? CS bar. This is connected to CS bar. Okay, this is connected to CS bar. Now, when I want to use this 8259, your CS bar should be 0. So this is active 0. So this chip select is connected to output. Okay, और यहाँ पे क्या लिखा है? IO CS 0. That is IO device chip select.
Now for this 3:8 decoder, this 8259 will be used as IO. 3:8 decoder को ये उसको लगेगा कि ये भी IO डिवाइस है, इसलिए ये IO CS0. दूसरा क्या है, अगर ये सिलेक्ट होगा तो ये रैपिड स्टेटस क्या हो जाना चाहिए, 001. तो 001 होगा तो ये सिलेक्ट होगा. तो ये कहाँ पे कनेक्ट है, IO CS1. ओके, और ये कहाँ पे कनेक्ट, IO CS2. इसका मतलब क्या है, अगर मुझे एक ही 8259 लगाना है तो मैं ये CS बार इसको ही लगाऊंगा. लेकिन मुझे अगर मास्टर स्लेव में चाहिए और मुझे ज्यादा 8259 लगाना है तो वो 8259 जो ज्यादा लगाने वाला हो, दैट विल बी, उसका चिप सिलेक्ट कौन करेगा, ये करेगा. इसका मतलब क्या है, जब ये तीनों 0 है तो 8259 ये काम करेगा क्योंकि उसका चिप सिलेक्ट हुआ है. जब ये 001 है तो CS बार किसी दूसरे IO डिवाइस को लगेगा या फिर किसी दूसरे 8259 को लगेगा. तो वो टाइम पे ये वाला चिप सिलेक्ट नहीं होगा, सिर्फ ये वाला होगा. जब ये रहेगा सो यू हैव दैट रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम 000 से लेके ... 111. फॉर एग्जांपल, इफ all are 1, A5, A6, A7 are 111, that means which will be selected, this will be selected. And this may be connected to with IO device or this may be connected with 8259 if I am using master slave more than 18259. तो आपको जैसा चाहिए आप ये यूज कर सकते हो चिप सिलेक्ट करने के लिए. चिप सिलेक्ट करने के लिए तो मैंने यहाँ पे सिर्फ ये फिगर में मैंने सिर्फ एक ही मुझे 8259 यूज करना है, इसलिए मैंने ये डायरेक्टली लगाया. और ठीक है, और आप एक काम कर सकते हो, ये सबको ऐसा करके आप ये सबको ऐसा करके क्या लिख सकते हो, यू कैन जस्ट राइट डाउन, ये सबको ऐसा करो और इसके आगे लिखो. इफ स्पेस नहीं है तो यहाँ पे ऐसा एस्ट्रिक डालो, नीचे में कहीं तो भी एस्ट्रिक लिखो और उसके सामने लिखो these chip select signals are used for other IO devices. Okay, so you have understood that I can use these A5, A6, A7 to select my IO devices और to select my only one 8259. आप इससे दूसरे भी 8259 अगर चाहते हो तो आप सिलेक्ट करो या फिर दूसरे IO डिवाइस सिलेक्ट. ओके, so this is just used, these signals are just generated to select for chip selection CS bar, because ये हमेशा आउटपुट 0 आएगा तो आपको CS बार को भी 0 चाहिए, तो ये डायरेक्टली मैं यूज कर सकता हूँ. नाउ दिस इज द यूज ऑफ A5, A6, A7. ओके, अभी दूसरी बात, आपका A0 विल बी ऑलवेज 0. वो क्यों? When you talk about 3:8 decoder IC, उसमें G2A बार, उसमें G2B बार और उसमें G1, ये 3 अनेबल सिग्नल्स है. इसका मतलब क्या है, अगर ये 3:8 डिकोडर को मुझे वर्किंग पे चाहिए तो मेरा G2A बार हमेशा 0 चाहिए, मेरा G2B बार हमेशा 0 चाहिए और मेरा G1 वो हमेशा +5 को कनेक्ट चाहिए. इसलिए देखो मैंने G1 डायरेक्ट +5 को लगाया और G2A बार को क्या मैंने वो A0 को लगाया. और मैं जब मुझे इसको यूज करना है तब मेरा A0 हमेशा 0 रहेगा, तब जाके मेरा G2A बार 0 रहेगा और मैं ये यूज कर पाऊंगा. G2B बार का मैंने क्या किया है, G2B बार मैंने M/IO बार हमने पढ़ा ही है while explaining you while understanding the pin configuration of 8086. M/IO bar, what is this? M/IO bar is memory IO map, memory map और IO map. अगर मुझे मेमोरी को मैप करना है तो ये पिन मेरा 1 रहेगा. ओके, ये पिन मेरा 1 रहेगा. ओके, ये पिन मेरा 1 रहेगा. ये मैंने लैच बफर से लाया या फिर आप डायरेक्ट 8086 से लाओ, कुछ भी, देयर इज नो हार्म बिकॉज M/IO bar is the one of the pin of 8086. अगर मैं मेमोरी को कनेक्ट कर रहा हूँ तो दिस पर्टिकुलर पिन शुड बी हाई, और अगर मैं IO डिवाइस को लगा रहा हूँ तो दिस पिन शुड बी 0. तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे IO डिवाइस को ही लगाना है. ओके, so this pin should be 0. So you know that this pin will be always 0.
this pin will be always 0. So that's why this pin direct जो मैंने connect किया G2B bar को connect. इसका क्या मतलब होता है? If you are a system designer, you have to work with the minimum hardware. और सब पिन यूटिलाइज होने चाहिए. कौन सी भी पिन हैंगिंग नहीं होनी चाहिए. हैंगिंग बोले which is not connected. So I have to utilize, I have to use smartly, I have to use my brain in such a smartly way that all the pins should be utilized और मेरा काम भी होना चाहिए. So you can see that A7. Yes. So I have taken the attendance. Okay. So this G2B bar is connected with M/IO bar. This will be 0 as far as my IO devices will be concerned. So G2A bar 0, G2B bar 0, and G1 is plus 5 volt. Okay. So all the connections I have done properly. This is 3:8 decoder. Depending upon your 0 for the pins of A5, A6, A7, you will select any one of this. Okay. And that will be connected as a chip select. You will be connected with IO device. Okay. Then your RD bar and WR bar, which are from, आप directly यहाँ से भी लिख सकते थे, मैंने यहाँ से लिया. So WR bar and RD bar will be directly connected with RD bar and WR bar of 8259. Okay. And you can see here INT as the output pin, output signal, which will be connected with INTR, and INTA bar is the input pin, which is connected with INTA bar of 8086. Okay. So the connections are made here, and your IO devices which are connected. Now आप जो बाहर से जो IO devices लगा रहे हो ना, वो IO device में भी CS bar होता है. वो CS bar select करने के लिए आप डायरेक्टली ये लगा सकते हो. I mean to say that. I am repeating again. आप जो यहाँ पे 8 IO devices लगाओगे, वो IO devices में भी चिप सिलेक्ट का ऑप्शन होता है. उसमें भी एक पिन होती है जो CS बार होती है. उसको सिलेक्ट करने के लिए आप इसमें से ये यूज कर सकते हो. एक IO डिवाइस को ये लगाओ, दूसरे को ये लगाओ, तीसरे को ये लगाओ, चौथे को ये लगाओ. ओके. एंड डिपेंडिंग अपॉन दिस नंबर यू विल सिलेक्ट वन ऑफ देम एंड that IO device will be work. Okay. So this is about the interfacing of 8086 with 8259. Okay. हम डायरेक्टली 8259 को 8086 से डायरेक्टली नहीं लगा रहे. दिस इज द डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द इंटरफेसिंग इज डन. ओके. अब इसमें हमको कुछ और पार्ट है दैट विल बी स्टडीड इन द नेक्स्ट सेशन. ओके. Okay, if you have any questions you can ask, otherwise we can do for today, and the remaining part of this interfacing we'll see in the next lecture. सर वो x tends to 0 सर वो क्या है, मेरे को वो समझा नहीं सर. x tends to 0 नहीं है, ये डोंट केयर कंडीशन है. मैंने क्या बताया, मेरा जो A0 से A19 है उसमें से कौन कौन से मैंने सिग्नल यूज किए. मैंने A0 यूज किया इधर, मेरे A1 मैंने यूज किया है इधर, जो हमेशा 1 रहेगा क्योंकि मुझे IO डिवाइस कनेक्ट करना है. तो मैंने यहाँ पे लिखा है A0 हमेशा 1 चाहिए जब अगर IO डिवाइस कनेक्ट करना है, A0 आपका 0 चाहिए जब मेमोरी कनेक्ट करना है. तो मेरा A0 यहाँ पे यूटिलाइज हुआ, मेरा A1 यहाँ पे यूटिलाइज हुआ. A2 आपको दिख रहा है कहीं पे? नहीं, A2 मैंने कहीं कनेक्ट नहीं किया, लेकिन A2 को मुझे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना. तो A2 हमेशा 0 रहेगा, उसको 0 रहेगा या फिर उसको डोंट केयर बोल सकते हैं आप. 0 रहेगा या फिर डोंट केयर. तो A2 डोंट केयर, A3 डोंट केयर, A4 डोंट केयर, A5 मैंने यहाँ पे यूज किया है, A6 मैंने यहाँ पे यूज किया है, A7 मैंने यहाँ पे यूज किया है, A8 से लेके A19 मैंने कुछ भी यूज नहीं किया है. तो वो सब के सब 0 रहेंगे. उसको 0 बोल सकते हैं या फिर डोंट केयर बोल सकते हैं. समझा? ओके सर, समझा सर. So if you have any questions, any doubt, you can ask. Otherwise, you can leave. Thank you. थँक यू सर. थँक यू सर. सर टॅझमचं डाऊट विचारू शकतो का? हाँ बोल ना. सर